Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. This is Ghazali official channel. Today I'm here with another topic that is about conversion from one system to another. Now which kind of conversion? In the previous lecture, as you people have learned about that there are two types of systems through which we measure the medicines, and that systems were apothecary system and obviously metric system. In that lecture we have learned that apothecary system is an old system, while was also known as imperial system, while metric system is a decimal system and used universally. It is a modern system. So in apothecary system that we learn that there are grains, ounce, pound and pint, fluid ounces, like these units were used in apothecary system. That was used only for compounding and dispensing medicines, as you learned in previous lecture, while the other metric units are metric measurement was done for weights in milligram, microgram, gram and kilogram, while for metric volumes there are two types of units are used, that are milliliter and liter. Today we will know that how we will done this conversion from one system to another. From which one to another? Like from apothecary to metric, or from weights to volume. Okay, so weights and volumes can be converted from one system to another. वेट्स एंड वॉल्यूम चाहे वो आप एपोथेकेरी सिस्टम में पढ़ रहे हो, या मतलब अगर आप वॉल्यूम जो है वो उसका ले लें, एपोथेकेरी सिस्टम का ले लें, या फिर वेट्स जो है आप वो मैट्रिक सिस्टम का ले लें, या फिर दोनों एक ही सिस्टम का हिस्से हैं लेकिन डिफरेंट यूनिट्स हैं. ठीक है, वेट्स हैं और कुछ मेडिसिन के आपके पास वॉल्यूम है, तो ये कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप वन टू अनदर सिस्टम को? तो इस कन्वर्जन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है. सो वो फार्मूला यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे. सो द कन्वर्जन ऑफ ग्रेन्स. ठीक है, ग्रेन्स क्या है? ग्रेन्स एक यूनिट है फॉर मेजरिंग मेडिसिन, छोटा यूनिट है, ग्राम से. सो द कन्वर्जन ऑफ ग्रेन्स टू ग्राम्स एंड वाइस वर्सा. So to convert grams to grains, we will multiply grams by 15, and if we want to know how many grains are there in grams, so we will find out it by dividing it by 15. So as I wrote here that this will gives 4 grams. So let us know that how it will give us 4 grams. Now for example, if you want to know that how many grams are there in 60 grams, so we will divide this 60 by 15. Now as I know that its answer was 4, so if you know about the table, so you can do it easily. I will put the 15 here and will multiply it by 4. So as I know 5 4s are 20, so I'll put the 0 here and the 2 integer here. 2. 2. Okay, so 4 1s are 4, and when I add this 2 to this 4, so I'll get its answer 6. So I'll put it here 6. So it gives 60. I'll put here 4. Then we'll put here 60. So as it is done, okay, it is totally solved out. We know that 15 multiplied by 4 is equal to 60, or 60 divided by 15 will give us 4. So the answer will be that how many grams are there in 60 grains. So the answer will be that there are 4 grams. 4 grams in 60 grains, as grain is a little unit and gram is big unit. Okay girls, you can put the formula like, and you have to learn this division or multiplication method, so then you will get its answer. Now
being a LHV student, you have to know about the domestic measures as well. As you work in the community, as LHV works in the community, so it is important to have knowledge of domestic measure. Domestic measure मतलब जो घर में जो मेजरमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है. डोमेस्टिक क्या है? घरेलू, जो आप घर में यूज़ करते हो, ठीक है. तो घर में आप क्या यूज़ करते हो? आप घर में आप यूज़ करते हो टी स्पून, टेबल स्पून, डेजर्ट स्पून, 1 टी कप यूज़ करते हो, टम्बर्स यूज़ करते हो, ठीक है. तो आपके पास इस मेजरमेंट के लिए ये सब कुछ, आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास 1 टीस्पून जो है वो 5 ml के बराबर है. एज यू कैन सी इन द इमेज दैट टी स्पून इज़ हेयर, ठीक है. जो छोटा चम्मच होता है, जिसको छोटा चम्मच बोलते हैं, खाने का चम्मच बोलते हैं या चाय का चम्मच बोलते हैं, ठीक है. और द अदर वन इज़ टेबल स्पून, ठीक है. सॉरी, ये चाय का चम्मच है, ये खाने का चम्मच है. खाने का चम्मच मतलब जिसे आप राइस, फ्रूट चाट्स और कुछ भी, ठीक है, चाट वगैरह खाते हो या कुछ भी खाते हो, चावल वगैरह खाते हो, वो खाने का चम्मच होता है. और जो चाय से आप उसमें चीनी मिक्स करते हो वो टी स्पून है, ठीक है. तो ये आपके पास जो टी स्पून है ये 5 ml के इक्वल है, जबकि आपके पास टेबल स्पून जो है वो 15 ml की इक्वल है. ये डिज़र्ट स्पून है. डिज़र्ट स्पून जो है जिसे आप मीठा खाते हो, ठीक है. यू कैन सी इन द इमेज दैट इट इज़ विद आइसक्रीम और समथिंग लाइक मीठे के खाने के लिए जो आप यूज़ करते हो वो डिज़र्ट स्पून होता है. तो डिज़र्ट स्पून जो है वो 3 ml बड़ा होता है टीस्पून से, ठीक है. और फिर टेबल स्पून इससे भी बड़ा, वो 15 ml है, ठीक है. सो टी स्पून इज इक्वल टू 5 ml, डेजर्ट स्पून इज इक्वल टू 8 ml, टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, वाइल 1 टी कप इज इक्वल टू 120 ml के टी कप है, ठीक है. 1 फुल टेम्बर इज इक्वल टू 240 ml. ये टम्बर, ये ग्लास टाइप जो होता है, ठीक है. ये ग्लास मतलब इस टाइप का ग्लास, इसको टम्बर बोलते हैं, ठीक है. तो ये 240 ml का है. और अगर आप जो है तो आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपने 0.0 ml या 0.20 ml जो है ड्रॉप पर मेडिसिन के, मतलब आपने पेशेंट को देने, बच्चे को देने, ठीक है, घर में किसी को भी देने, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ड्रॉप जो है वो 0.0 ml के बराबर है. अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपने 0.2 ml आपने इस ड्रॉप के यूज़ करने हैं, कोई भी ड्रॉप है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन है जो आपको डॉक्टर कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.0 ml. Okay, the next topic is about temperature conversion. जैसे कि आपके पास मेडिसिन की कन्वर्जन का सिस्टम था जो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. इसी तरह टेम्परेचर कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कम्युनिटी में काम करते हो, ठीक है, हॉस्पिटल वर्क करते हो, तो आपको टेम्परेचर कन्वर्जन भी आना चाहिए. किस किस्म का कन्वर्जन, यानी टेम्परेचर जो है हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. कुछ सेंटीग्रेड में हम उसको फाइंड आउट करते हैं और कुछ फ़ारेनहाइट में. तो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट होता है. एज विद अदर सिस्टम, थर्मोमीटर्स हैव 2 सिस्टम्स आल्सो. जैसे कि बाकी सिस्टम है, जैसे कि हमने पैथेगरी और मैट्रिक सिस्टम पढ़ा है, इसी तरह थर्मोमीटर के भी 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम है. इन हॉस्पिटल बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर्स आर यूज्ड. हॉस्पिटल में क्या होता है कि थर्मोमीटर और सेंटीग्रेड थर्मोमीटर जो है 2 टाइप्स के यूज़ होते हैं. एक फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों यूज़ होते हैं, दोनों थर्मोमीटर्स जो है तो यूज़ होते हैं. तो therefore it is important to know the conversion system from one to other. तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है. टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट वी यूज़ द फार्मूला. सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कि उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, जो फार्मूला यूज़ होता है, दैट इज़ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32. ये फार्मूला कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी समझाती हूँ. और टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड वी यूज़ द फार्मूला. सेंटीग्रेड में कैसे यूज़ होता है, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन इट. Okay, so first of all I'll solve this formula for you people, just like के फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है. सो एज वी नो दैट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32. सो आई विल पुट दिस थिंग्स इनटू फार्मूला. एज वी नो दैट
Fahrenheit is equal to 9 by 5 into centigrade plus 32. So I'll put it. Now let's suppose if we have 37 degree centigrade, okay, 37 degree centigrade temperature of a patient. So I'll put it in formula like 37 multiply by this 37 is 37 degree centigrade temperature of a patient. Okay, so I'll put it in formula 37 multiply by this 9 divided by 5 plus 32 plus 32. As you know that this bracket means multiply sign, so I put this multiply sign here. So first of all I'll do multiplication. So for multiplication I'll do this here in rough work. 37 multiply by 9. So as we know that 7 9s are 63, so I'll put the 3 here, 3 and 6 here. Then again, and when I multiply this 3 into 9, so I'll get 3 9s are 27, and when I'll add this 6 to it, so I'll get 27, 28, 29, 30, 31, 32 and 33. So I'll put here 33. So after multiplication I get the answer 333 divided by 5 and plus 32. Now after multiplication I have to do division method. 333 will be divided by 5. So as you know that in table of 5 there is no integer like 33, but there is integer like 30. So I'll put at 5 6 are 30, 5 6 are 30, and when I subtract this 30 from 33, so I get 3 again. I'll put this 3 as well with this 3, so it is again 33, again 33, again we have 33 digit, and as you know that in table of 5 we haven't any figure like 33, so we put again 30 here. But again when we subtract this 30 from this 33, so we again get 3. Now there is no digit here, but we have integer 3 here, so we have to finish it as well. So we will put a dot here, and this dot, as you know that this dot will give us 0 here, so we will put this 0 down with this 3, and when again we put at 6 here, so we get the digit, this is a dot. Okay, so we get 30, and now there is no digit, no integer with us, so it is done. But we have get 66.6 answer from this, so from this division, so we will put it 66.6, but we have to do this addition as well as we have to the integer 32 formula. So we will do now, we will do this, always rough work. Okay, addition here 66.6 plus 32. When we do this addition, we get 6 plus 3 9, 6 plus 2 8. Now here is no integer, so we will put this 0.6 with it, so we get 98.6 from this formula.
So Fahrenheit will be 37 degrees centigrade. 37 degrees centigrade of temperature of a patient will be equal to 98.6 degree Fahrenheit. Now this is a normal temperature. If you are going to check temperature fever for a patient in hospital while you are working, whether you are working in a BHU, RAC, or whether you are working in a big healthcare facility in a hospital, so you have to know, you have to memorize that 37 degrees centigrade is equal to 98.6 Fahrenheit, as we have solved out it here. Now the other formula that is given for centigrade to centigrade, Fahrenheit to centigrade, we have the formula centigrade is equal to Fahrenheit minus 32 multiplied by 59. As I have done this formula for you people, so you must have to try this formula personally, individually, and have to give it as your assignment to us at your school, at your college, sorry. Okay girls, you have to try this formula as I told you the formula, and I solve out the one formula for you people. You must have to try it personally as well. I have assignment for you people that you have to convert 35 degrees centigrade into Fahrenheit using formula, as I told you about the formula, and to convert 104 degree Fahrenheit into centigrade using its formula. Thank you for watching. Take care of yourself. If you people have any query or suggestion regarding this lecture, so you can ask us about the lecture questions or queries. You can ask from at this Ghazali official email address or on these WhatsApp numbers. We'll see you in the next lecture. Till that, take care of yourself. Allah Hafiz.